Welcome back, students, once again to e-learning program of Modern International School, HISWA. Friends, in this video lecture, we will discuss examples problem of exercise 10B. Prior to this video, we had covered exercise 10A, which these were the basic of percentage, friends. That means calculation types of problems. So here, friends, we will face some statements and try to solve the sums which is related to the percentage. Now, friends, let's get started. Question number 1 says, friends, so please, all of you, please take out your books, page number 143, and see, friends, question number 1. So friends, the question number 1, as you can see the question number 1. Now look at the question number 1. An alloy contains 32% copper. Now first write the given, whatever the given, friends. An alloy 32% copper. Copper, friends, how much copper is 32%? And now zinc contains, friends, 40%. Okay, and the rest nickel, rest. Now see, friends, and find the grams, the quantity of each of the content in 1 kg of alloy. Now the alloy, friends, is 1 kg. First we have to change this kg into grams, because we have to find the solution in terms of grams, friends. So if you multiply 1 with 1000, becomes, friends, 1000 grams, because 1 kg is equal to 1000 grams. So this is the first. Now, and see, friends, because it contains copper as 32% and zinc 40%. Now we have to find the rest. What about the rest of nickel? Very simple, friends. Means find the value of the grams of copper, then the value of zinc. Okay, then add both the values, and now subtract from 1000. So here, friends, now first see the quantity of copper. Quantity of copper in gram. So copper says 32% of this alloy. 32% means 1000 multiplied by 32, friends. 2 times 0 will get cancelled, means 320, and this is gram, friends. Now the next, the quantity of, friends, zinc. So the quantity of zinc, friends, 40% of किसका 40% alloy का, मतलब 40 यानी 1000 ग्राम मल्टीप्लाई बाई 40,000. 40% means 4 by 100, friends. So 20 will get cancelled. So this is, friends, 400 grams. And now we have to find the rest containing, friends, rest containing in the alloy is zinc. If you add this to quantity, friends, and then subtract this from 1000. Now, friends, now the rest quantity of nickel. That means the quantity of nickel, the quantity of nickel, friends. The quantity of nickel, friends, 1000 minus sum of these two, friends, sum of these two values, means 320 plus 400 grams. Now, friends, this is 1000, friends, minus this is 4 plus 3, 720. After subtracting, we will get, this is 200, friends, 80 grams. So this is your required answer.
Now see friends, the same question with alternate method, second method say an alloy contains 32% copper, 40% zinc and the rest nickel. Find the grams, the quantity of each of the contains in 1 kg of alloy. Means आपको इसकी to find the quantity of copper, how much the quantity of copper in this alloy and zinc in this alloy and the rest nickel. Now friends, but there is no percentage of about nickel. What the percentage of nickel is added to this alloy? Now find friends the percentage of nickel. Percentage, that means percentage of nickel in 1 kg or friends is equal to 1000 grams of alloy is equal to friends क्या होगा, वेरी सिंपल. देखिए 32% फॉर कॉपर एंड 40% फॉर जिंक, सो द रेस्ट इज निकल, इट शुड बी रेस्ट निकल. नाउ फ्रेंड्स परसेंट मीन्स 100 फ्रेंड्स, 100% मीन्स दिस इज 32 और प्लस 40 को आप ऐड कर देंगे. ओके जो आएगा ये क्या आएगा, दिस इज परसेंटेज ऑफ जिंक. जाहिर सी बात इन दोनों को अगर ऐड करेंगे 40 प्लस 32 कितना हो जाएगा, 72% इन दोनों का है. 72 में से कितना ऐड करेंगे, 28. डैट मीन्स 28% फॉर रेस्ट निकेल के लिए होगा. इस तरह से फाइंड कर सकते हैं. 100 में से टोटल 100% होता है 100. दिस इज सम इज 72%. नाउ दिस इज 28% फ्रेंड्स. So the 28% is for friends nickel. Now friends the quantity of nickel. Now quantity of nickel is equal to friends. Now the nickel is containing, that means nickel contains in 1 kg of alloy, means 1 kg means 1000 friends, because we have to find the value in terms of 1000. And this is of friends 28%. So this is friends 1000 multiply by this 28% means 100 in division friends, divide by 100, 20 will get cancelled friends. 280 gram. This 280 gram is for quantity of nickel friends. So this is the first answer. Similarly we can find out the quantity of friends, we can find the quantity of zinc and the quantity of copper as you solved in the just couple of minutes ago. Okay friends, this is the second method to find out the quantity of nickel friends. So this is the second method. Okay, now next, now see friends, question number second says out of second number example, out of her total monthly income, Mrs. Saxena spends 30% on house rent and 60% of the rest on household expenses. If she saves 6,300 rupees per month, what is her total monthly income? Simple, very simple friends. First the amount that we are going to find, consider the same. Now we have to find the monthly income. Consider the monthly income friends. Now here let monthly income, her total monthly income. Now friends, here this question, the book solves this question in two methods. First, taking the total monthly income is as 100. Now we are going to solve the alternative second method, considering as the x rupees the total income. Now let the her total monthly income is x rupees. Okay, see friends, now क्वेश्चन कह रहा है कि मिसेस सक्सेना है जो अपने आउट ऑफ हर टोटल मंथली,
अपने टोटल मंथली इनकम का 30% जो वो घर के किराए देने में खर्च करती हैं, और 30% खर्च करने के बाद जो बचता है उसमें से 60% वो घर के सामानों में, घर के एक्सपेंसेस में खर्च करती हैं। ओके, और उसके बाद वो 6,300 रुपये बचाती भी है हर मंथ। तो व्हाट इज़ हर टोटल मंथली, उसका टोटल मंथली इनकम कितना होगा? इस क्वेश्चन में बुक्स में 2 तरीके से बनाया। फर्स्ट कंसीडर 100 मान के, और दूसरा एक्स। मैं एक्स मान के बनाया, 100 मान के बहुत आसान है, एक्स मान के देख लीजिए आप। ओके, नाउ लेट जो फाइंड करना उसे एक्स मान लेंगे। टोटल मंथली इनकम इज एक्स रुपीज़। नाउ फ्रेंड्स हियर इज द गिवन स्पेंड ऑन, पहले फाइंड कर लेते हैं। सी स्पेंड्स ऑन हाउस रेंट कितने? 30% करती है टोटल इनकम का। एक्स मल्टीप्लाई बाय फ्रेंड्स 30/100। 30% मीन्स फिर 30/100, तो एक जीरो विल गेट कैंसिल फ्रेंड्स। सो 3x मल्टीप्लाई बाय 10 एंड रुपीज़ मीन्स इतना अमाउंट 3x डिवाइडेड बाय x रुपीज़ is spended by Mrs. Saxena on house rent। उसके पास बचा कितना? ओके, नाउ वी कैन फाइंड द रेस्ट मनी आफ्टर स्पेंडिंग द रेंट ऑन द हाउस। नाउ द फ्रेंड्स, द बैलेंस मनी और द रेस्ट मनी, वी कैन से द बैलेंस और द रेस्ट। नाउ द रेस्ट मनी, rest the total x friends, subtract write the x and subtract this expenditure money. This is 3x divided by 10. Now this becomes, take the LCM of 10x friends। अब थोड़ा फास्ट कैलकुलेट करेंगे, ये सब मैंने LCM लेने वाला बता दिया था। ओके, थोड़ा सा फास्ट देखेंगे। 7x डिवाइडेड बाई 10, कैलकुलेशन बिल्कुल फास्ट, भी कैलकुलेट फास्ट। ओके, यहाँ पे 1 and 10 का LCM लेके इसको सोल्व किया, 10x रुपीज़। अब नाउ फ्रेंड्स सेकंड स्टेटमेंट सेज 60% ऑफ द रेस्ट, मतलब इस रेस्ट का 60% स्पेंड्स ऑन द हाउस एक्सपेंसेस, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। नाउ दिस इज द फर्स्ट एक्सपेंडिचर ऑन हाउस होल्ड। नाउ द सेकंड एक्सपेंडिचर मीन्स दैट मनी स्पेंड्स ऑन, नाउ spends on house hold households पे कितनी? 60% ऑफ रिमेनिंग। डेट मीन 7x डिवाइडेड बाई 10 फ्रेंड्स एंड मल्टीप्लाई बाई, नो फ्रेंड्स हेयर 7 रिमेनिंग 7x डिवाइडेड बाई 10, 60% मल्टीप्लाई बाई 60%, 6/100 फ्रेंड्स। सो हेयर फ्रेंड्स very simple, calculate. This is 0 will get cancelled friends, this 0 and this 0 will get cancelled. So this 2 3 friends 6 and 2 15 times will get cancelled. So here friends 7 3 21st and x is as it is and divided by 50. So this is the rupees that she स्पेंड्स ऑन हाउस होल्ड, वो इतने रुपीज़ हाउस होल्ड में खर्च करती है फ्रेंड्स। दिस इज द सेकंड एक्सपेंडिचर मनी एंड स्पेंडिंग ऑन द हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, एंड दिस इज द फर्स्ट and this was the first 3x by 10. Now here is the expenditure money and spending money is here and the spending money is here. Now think friends, think about ये टोटल रुपीज़ जो भी आप कमाते हैं, x रुपये हर महीने कमाते हैं। ओके, एक बार आपने 3x by x इतना खर्च किया, सेकंड बार इतना खर्च किया, तो टोटल खर्च कितना होगा? मीन्स टोटल इनको अगर ऐड कर दें, इफ़ यू ऐड दिस टू देन सब्ट्रैक्ट आफ्टर एडिंग फ्रॉम x, अगर x से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा वो सेविंग अमाउंट बच जाएगा। नाउ वी विल गेट द सेविंग अमाउंट। ओके फ्रेंड्स, नाउ आफ्टर इरेज 1 2 लाइन फ्रेंड्स। नाउ फ्रेंड्स, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस here friends, look at this is the saving amount. Now the saving amount friends, saving money here friends, saving money is क्या given है? 6,300। now friends the saving money क्या होगा? x is the total minus friends इन दोनों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, this is 3x divided by 10 and plus 21x friends divided by 50।
ये टोटल, क्योंकि ये खर्च हो गया ना, खर्च मतलब अब जैसे सपोज आपके पास 10 रुपीज़ हैं, आपने एक बार 2 रुपये खर्च किया और 1 रुपये खर्च किया, तो आपके पास कितना बचा, आपने 7 बचेगा, तो मतलब इसको सब्ट्रैक्ट करना इन दोनों को ऐड करके। सिमिलरली फ्रेंड्स, और ये सेविंग अमाउंट यहाँ पे दिया हुआ है, ये क्या इसके साथ इक्वेट हो जाएगा। क्यों फ्रेंड्स, दिस इज द सेविंग अमाउंट इज ऑल्सो दिस एंड राइट हैंड साइड ऑल्सो सेविंग अमाउंट, मीन्स बची हुई रकम। सो नाउ फ्रेंड्स कैलकुलेट एंड सोल्व दिस सम। So here friends, x calculate inside this bracket friends. So this is 50, take the LCM, 50 LCM, divide this 50 by 10, 5 multiply by this, yani 5 3 ja 15 friends, x. So plus 50 is divided by 51, 1 multiply, this is 21. So here friends 21x and is equal to friends 6 3 2 times 0. Now friends we can calculate. Now see friends, here we can solve. Here this is x as it is friends, minus, now add 15 plus 21, this is 6 and this is 3, 36 friends. Okay, 36x divided by this is 50 and is equal to friends 3 6 2 times 0. Now take the LCM once again friends, 50 is LCM, so this is 50x minus 36x is equal to friends 3 6 2 times 0. Now here friends 14 after subtracting 36 from 50 and this is 50 is equal to 3 6 2 times 0. Now friends after cross multiplication, this is friends 2 25 times cancel and 2 7 ja friends. So here is 7x, here friends this becomes 7x. 7x divided by friends 25 is equal to 6 3 2 times 0. Okay friends, now see friends, cross multiplication 7x is equal to 3 6 2 times 0 multiply by 25. So here friends 1 is hidden, 7x multiply by 1, 7x as it is, and this multiply by this, this is x is equal to friends 3 0 0 multiply by 25. Now friends 7 1 ja 7 and 7 9 ja 63, 2 times 0 friends. So hence x is equal to friends 25 9 ja friends, 25 9 ja 225. How many zeros? 2 times 0. Hence we can say friends 22,500 is the monthly income of Mrs. Saxena. So this gives the required solution. Now friends please solve the others, because here the hint is given. Solve the examples friends. Okay, and if you do not understand any one of the examples problem, so please ask me friends. Okay, your homework is solve examples of exercise 10b. Have a nice day.